আমরা বলি সমস্ত লোকেরা মোদি চোর, মোদি চোর, মোদি চোর, বিজেপি চোর, মোদি চোর, বিজেপಿ চোর, মোದಿ ಚೋರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಚೋರ್, ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಚೋರ್, ಮೋದಿ ಚೋರ್ ಬಿಜೆಪಿ ಚೋರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆರ್ಭಟವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ BJP ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಯಸುವಂತಹ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ತನ್ನ ವಸಾಹತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಂಗಾಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿರೋಧಿಸುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. BJPಯನ್ನು ಮತಗಳ್ಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆದಿರುವಂತಹ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ BJP ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗಾಗ ಟೀಕಿಸ್ತಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಆಗಿರಬಹುದು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನಾಗಿರಬಹುದು ಆಗಾಗ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೊನ್ನೆಯಷ್ಟೇ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಜನರ ಮೇಲೆ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸೇನೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಂದರೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಚೋರ್, BJP চোর, ಮೋದಿ চোর, BJP চোর ಅಂತ ಹೇಳಿ জোরাಗಿ ಕೂಗಾಡಿದ್ದಾರೆ. এদের এই কর্মসূচি সকালে কিন্তু ওরা ছিল না, ওরা এসছে আমি আসার কিছুক্ষণ আগে। ওদের নাম দেখেছেন, ওরা কিন্তু তখন বক্তব্য রাখেনি, কিন্তু তারপরও স্যার আমি আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম যে ওদের বলতে দেওয়া হোক। তারপরে নিজেদের যেই বলা শেষ হয়ে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে এটা বাঙালির ইস্যু, এটা বাংলার ইস্যু, আমি বলবই, আমার কণ্ঠ চুপ করে রাখা যাবে না, বাংলার কণ্ঠ রোধ করা যাবে না, বাঙালির কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। মনে রাখবেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি, মোদের গৌরব মোদের আশা, আমরি বাংলা ভাষা। মনে রাখবেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় বলি, আমরা বাংলাকে সম্মান করি, বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল এক হোক বলে আমরা বলি, বাঙালির ভাই বাংলার ঘরে যত ভাই বোন এক হোক, এক হোক, এক হোক, হে ভগবান। আমরা বলি, ঈশ্বর ও আল্লাহ তেরে নাম সবকো সুমতি দে ভগবান। আমরা বলি, গড ইজ গ্রেট। আমরা বলি, সিন্ধান্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা। আমরা বলি, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবো কিরে হায়, কবি রবি ঠাকুরের গান। তার কারণ, গামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ আমার মনও ভুলায় রে। আর এরা হচ্ছে স্বাধীনতার পরে একটা পার্টি যাদের স্বাধীনতাতে কোনো কন্ট্রিবিউশন ছিল না। এরা হচ্ছে আজকে দেশের সবচেয়ে বড় ডাকাত, ডাকাতদের সর্দার, যারা আজকে কোটি কোটি টাকায় দেশটাকে বিক্রি করে দিচ্ছে, মানুষকে বিক্রি করে দিচ্ছে, আর লজ্জা করে না। এরা সাম্প্রদায়িকতার সুড়সুড়ি দেয়, এরা মানুষে মানুষে ভাগাভাগি করে। ওরা জানে না, যখন স্বাধীনতা আন্দোলন হয়েছিল বাংলার মানুষ সবচেয়ে বেশি জীবন দান দিয়েছিলেন, ফাঁসিতে গিয়েছিলেন, ক্ষুদিরাম গান গিয়েছিলেন, একবার বিদায় রে মা, ঘুরে আসি, হাসি হাসি পড়ব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আর সেদিন এই বিজেপির যারা লেজুর, তারা ইংরেজদের কাছে দাসখত দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। মনে রাখবেন, মহাত্মা গান্ধী যখন স্লোগান দিয়েছিলেন করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে, এরা তখন ইংরেজদের সাথে মিলে ভারতবর্ষের বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এরা বিশ্বাসঘাতক, এরা প্রতারক, এরা প্রবঞ্চক।
এরা মানুষকে মানুষের কথা বলতে দেয় না। এটা বাংলা, সব জায়গায় মুখ বন্ধ করে দিতে পারেন, বাংলায় পারবেন না। যারা আজকে নির্বাচিত হয়ে এসছেন, আগামী দিন বিজেপির কেউ নির্বাচিত হবেন না। কোন মা ভাই বোনেরা